Hello to all my people. Welcome to Hidden Tales. Now, this is the platform where you will be having my guest for now, and that's Dr. Amit Phillora. So, talking about Dr. Amit, I believe is a versatile personality altogether. For me, it has been a great help for my children also when it was about to be selecting a nice MBA, and he was the right mentor to assist my children. So, now it's your turn. So, here I welcome Dr. Amit Phillora. Hello and welcome, Dr. Amit. Very good evening, ma'am, and thank you for such a warm welcome. And it's a festival season, and I hope you all are enjoying in Mumbai. And I hope the rain is not that high, and it's the traffic is on. But last time when we had a topic on neuromarketing, and this time we are having plasticity. Neuroplasticity. Yes. So Absolutely. we can say that that's one of the favorite topic I studied couple of days back. I mean, when we had a collaboration with your parallel team, M Square, we had a discussion on neurodiversity at that time. Absolutely. So this is something new. It's a very new study which I'm doing, and I will be representing this in Vietnam as well in on 21st October. And it's something very new and very at the initial phase, not very much people know about it, but the when you'll start discussing about it, when you start asking things about it, you'll get to know that these things were there. It's just the name has been changed in a different different manner. It has just came up with a new, fresh packaging, I guess. Yes, kind of stuff like that. Absolutely. But Dr. Amit, if I talk about you, since you're my guest for now, and to be very honest, we've been talking about the education and the right platform. And when we see children today getting into because earlier in our time, when I talk about 2 decades before, we didn't had so much of options for our studies. It were the standard formats for all of us. You can say that that was like commerce or science, and like we just had three options. Now, when we look into them, we can see the capability to a higher level. When I see my children, what they want to, even if they want to get into photography, I believe that is also one of the great platforms. So, how it has been your experiencing dealing with children and parents for so many years back in? I have a different view, ma'am. Sorry to go in a different direction. What I feel is that what we learned in our duration of course of time, we had limited information and we had urge to know and learn a lot. So there were times you will spend a lot of time in libraries and actually studying with hard books and making notes and all. Now, when you see that, suppose you want to learn just the topic I said, neuroplasticity, the immediately Google is there. You'll just type in and you'll have the information ready, handy, and there's no effort you have done to no contribution you have done to find. So what I strongly feel and what this subject is about, and my things to the parents and the kids is that until unless you put a effort to actually learn the thing what it is about, then only you will have a grip of it. Like for example, if we talk about our generation, you remember we used to have numbers in our tips, phone numbers in our tips, the Absolutely. basic thing. Now if you'll ask us now, right, to tell LCD. me someone's, even you're the next colleague's number, you will not be able to tell except your husband's, your Absolutely. kids, these numbers will be there because you're using it frequently, those numbers. And us zamane mein, there were very limited people who had a landline number or something, and that used to be in our mind, okay, because we have to write down in a diary used to be there. Yes. Now everything is so handy and so comfortable. They have made you, the technology has made you a kind of a dependency, you Absolutely. can say lazy also. If you do not back in time, this kind of platform was not there the way we are talking now. You have to be actually be physically present in a few studio format, and the technology was like that. And you see that quality at that time, we our quality is very good, but you just see with the limitations what kind of quality they generated. So what I feel is that if you want to learn something and you want to have a better grip of it, you have to start from the old school. Because if you do not know the basic, you will not be able to survive.
So Right now, if you take it things in a very, you find things in a very easy manner, and you're not able to relate from the backside, you will not be able to, and you will be able to get good marks, but you will not be able to, like one of the best example very recently, if you get to know that there was a Indonesia or Malaysia flight, what you call crash. yes, And what was the main reason behind that was that the plane was in autopilot, and the autopilot got failed, and the pilot did not know how to fly the plane in a manual manner, which is very strange. If you are a CPL holder, if you are a very qualified person, 200, 300 people's life are there in your hand, and you do not know the manual option of it, just because the flight can control automatic itself, which is a very alarming and which is a very dangerous thing. So if you are learning advanced thing, it's very good, but at the same time, the basic thing should also be practiced, foundation has to be strong. foundation, and it should be practiced. It's Absolutely. something like, it's not that the people do not undergo the basic training, but they over a period of time they stop practicing it. तो ये तो बहुत easy है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये करने के, nobody will go to the hard way. They will always choose an easy way, that it will save time, it will save different thing. So when I say that, to all the parents, whenever I meet, and they say that our kids are struggling in mathematics, or they're struggling in calculation, so I ask, like, how do you how do you guide your children in a for basic mathematics? Calculator, no. Abacus is there. You remember 1, 2, 3, 4, 5, then strike, those kind of things. Calculation, 1, 2 fingers, basic, Vedic maths, how you short tricks by which you will be able to calculate things very fastly, rather than making a person dependent on calculator will give you accurate Technology result, no plays a doubt about major that. role here. Yes. So, and that's what the competitive exams are looking for. You name us exam, whatever competitive exam you say, they will not tell you to use. They will not have a questions where which are technology dependent. They will ask something which you can answer it manually, fatafat. Right. So they focus on reasoning, rational thing, and mathematics. In a general 10th 12th का maths ही क्यों पूछते हैं? Why Ab- don't they ask advanced maths on that? So I always say that you make your foundation very strong, and the ability of a child or a person to be creative and learn more and more, and always step out of the box. So true. But if you repeat certain things and there's no improvement is happening, that means you're something is wrong. Absolutely. So that's what I feel that, and that's how we deal with the students and the people who are working in corporate. If they're not performing well, giving all the circumstances, we try to understand where the lacuna is, where is the blockages, so that we can remove and start their relearning ability again, and so that they can progress well in their life. Absolutely. So, Dr. Amit, now since you've been talking about neuroplasticity, now if I talk to a normal layman term, probably they might not understand. So, how would you define neuroplasticity? In And a so that the very audience get to know more about it, and probably they can relate it with their child also. so basically it's a we all have heard a term called as learning ability. Right. So the ability of your brain to change continuously is neuroplastic. Basically, how you learn things and how you implement. अगर आप बहुत चीजें पॉजिटिव सोचते रहते हो, तो आप पॉजिटिव साइकिल में जाते हो, उस हिसाब से चीजें अपनी लाइफ में करते हो. अगर Mm. आप बहुत सारी चीजें नेगेटिव चीज को लेके चलते हो, तो आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करते हो. So Right. that there's something called as negative neural cycle and positive neural cycle. So Mm. it's a game of thought process. आप कैसे सोचते हो और उसको अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, और इसको एग्जीक्यूशन किस डायरेक्शन में करते हो, उसमें जो न्यूरॉन्स और न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं,
That is what called as in very layman term neuroplasticity. Plasticity is what? Elasticity, stretchability. Right. आपके ब्रेन में कितनी, आप में कितनी क्षमता है अपने आप को पुश करने की, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज होने के लिए. And this is so deep thought actually, like when we think about it. So अगर मैं एक normal layman की बात करूँ, specifically for a child, अभी कोई काफी बच्चे जो हैं, like I see children who've been participating for CAT. Now CAT is again something people are trying. I have many callers and celebs children also. They have been going for UPSC also. So now these are the high and the tougher exams. So what is your advice for these children to be, like, so that, because when we talk about UPSC, it's very difficult to crack in one. I've seen many who have been trying for 2 attempts or 3 attempts. So, how you can train them? Probably, what can you tip them so that they can well prepare themselves for the future? So UP or any competitive exam, all you need is consistency. It's not about 18 hours study or 20 hours study or 22 hours study or rigorous continuous hours of study what you do. How much you can study and how much you can retain that knowledge. जैसे देखिए, अगर आपने 100% पढ़ा तो 100% आप कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. अगर आप 100% पढ़ते हो तो 70% या 60% आप एग्जीक्यूट करने की आप में एबिलिटी होती है. Because obviously you will tend to, there's so many things which is going on, which might go, you may forget because of the memory issue or any other things which happens. सो जो भी पढ़ो आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, और आपके टाइम टेबल जो होता है, विच इज अ टाइम टेबल विच यू मेक, स्टिक टू दैट and do not deviate from the topics which you are selecting. अब जैसे आप सब, we all might have seen a very good movie 12th fail. Yeah. उसमें एक जो मेन कैरेक्टर होता है, उसका जो फ्रेंड होता है, उसको काफी समय तक समझ में नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट ले. कभी वो कोई सब्जेक्ट लेता है, कभी वो कोई सब्जेक्ट लेता है, कभी वो कोई सब्जेक्ट लेता है. सिमिलरली एक वेब सीरीज भी आई थी जिसमें एस्पेरेंट करके एक वेब सीरीज थी, सुना होगा. उसमें भी एक कैरेक्टर जो होता है वो ऐसे ही होता है कि कभी एंड में जाके अपना टॉपिक चेंज कर लेता है. He was not able to do anything and वो एक इंस्ट्रक्टर बन के रह जाता है, whereas his friend becomes a IAS and IPS person. The same in the movie. So आप बार बार चीजों को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, and that is what I hate about the new education policy. जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट लिया, सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक साइंस सब्जेक्ट लिया, एंड आप आगे उसको कंटिन्यू करते हो, फिर आपको एक पॉइंट में लगता है यार ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं आर्ट्स में चला जाऊँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं कॉमर्स में चला जाता हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं वहां. तो उससे क्या होता है कि मतलब बिन थाली के, मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, आप मतलब आप कहीं के नहीं रहते. जी जी जी, तो बिल्कुल. मतलब थ्री इडियट्स एक मूवी थी जिसमें आपने देखा था, वेयर एज जिसमें आमिर खान स्टेट्स दैट यार, अगर एमबीए करना था तो इंजीनियरिंग क्यों की भाई तुमने. आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहे, आप एमबीए बन के आप लोगों को पीपल मैनेजमेंट कर रहे हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट फॉर दैट व्हाट कंसिस्टेंसी यू आर थ्रोइंग इट. सो अगर यूपीएससी की चीज है तो यूपीएससी में आपने एक टॉपिक अगर आपने चूज किया, बहुत सोच समझ के चूज किया, उसमें बहुत मेहनत की और कंसिस्टेंसी उस पर शो की, तो देर आर चांसेस दैट यू विल सक्सीड ऑन दैट, और उसी टॉपिक पे आपको लेके फिर आप आगे बढ़िए. दूसरों की बातों से कंफ्यूज और इन्फ्लुएंस ना हो. एंड फेलियर डज नॉट मीन दैट कि इट इज अ स्टॉपेज. आप अगर कल को यूपीएससी नहीं भी क्लियर कर पाते हो, देयर अदर थिंग्स इन योर लाइफ विच विल, उसमें ये पढ़ाई बहुत इंप्रूव आएगी. चलो मान लो यूपीएससी नहीं क्लियर किया, पीएससी क्लियर हो जाए, पीएससी नहीं क्लियर किया, तो आजकल तो कॉर्पोरेट के भी एग्जाम बहुत टफ होते हैं. सो Yeah. वो वहां पे यूज हो जाए. उसके अलावा एक जो आपकी जो यूपीएससी की जो तैयारी होती है, वो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको कंसिस्टेंसी सिखाती है, टाइम की वैल्यू सिखाती है, और बहुत सारी चीजें सिखाती है जो कि आपको लाइफ में सक्सेस दिलाने के तरीके पैदा करती है. सो डू नॉट थिंक दैट कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन दैट मच इन दिस, कि तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ. यूपीएससी में फायदा भले ही एग्जाम को क्रैक करके नहीं हुआ, पर आपकी पर्सनल लाइफ ग्रोथ को बहुत ज्यादा फायदा हुआ.
बिकॉज आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप 10 लोगों के, बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में कम्युनिकेट कर पाओगे, आप उस नॉलेज को प्रेजेंट कर पाओगे, और जो आपने चैलेंजेस देखे वो अपने जूनियर्स को उनको गाइड कर पाओगे। कई बार हमने ऐसा देखा है कि मतलब आप एज अ इंडिविजुअल फेल, बट as a guide you succeed by helping so many people by showing the way कि this may lead you a failure, ऐसा नहीं करके ऐसा करो। And that's the reason you may find that top most gurus और the teachers और जो भी यूपीएससी वगैरह के रहे हैं, वो उन पोजीशंस में नहीं बैठे हैं, बट उनके थ्रू बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग यूपीएससी क्रैक किए हैं, या फिर जो भी कैट मैट के एग्जाम्स क्रैक किए हैं। सो एंड कई ऐसे भी यूपीएससी के लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी आईएएस आईपीएस की जॉब छोड़ के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल के रखे हैं। Start किया, I तो believe it. दैट इज समथिंग, आपको उसमें यही चीज चाहिए होती, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड नो नो पेन नो गेन एटीट्यूड। Understood. Completely इस agree to your words. हाँ, मतलब अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट मेहनत आपको सही डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, गलत डायरेक्शन में। आप Absolutely. ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे, मेहनत करोगे जहां से आपको अगर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो वो तो जीरो है। जो जैसे साइंस का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, अगर आप किसी कुली को बोलो कि भाई मैं तुमको ना पैसे नहीं दूंगा, तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया, बिकॉज अगर आप सर पे सामान रख के जाते हो विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, साइंस के हिसाब से वर्क डन इज जीरो। साइंस के हिसाब से वर्क डन इज जीरो, ग्रेविटेशनल पुल एंड फोर्स आपको उसको कट कट कर दे रहा है। अगर आप ये चीज कुली को बोलोगे तो वो क्या करेगा, मारेगा ना पकड़ के, ये मेरा पसीना निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि काम काम नहीं किया है आपने। तो वो डायरेक्शन की बात है कि वो आप किस डायरेक्शन से उसके ऊपर कहाँ पे कितना कैसे एफर्ट डाल रहे हो, और उसका आउटपुट कैसे निकल रहा है। तो ये चीजें यूपीएससी वाले या किसी भी जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि मतलब डिटर्मिनेशन रखें, टाइम की वैल्यू रखें, और ठूस ठूस के ना भरें, जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ें और उसको उतना प्रैक्टिस करें। Absolutely. That's so nice. Dr. Amit, whenever I've spoken to you, I always, one thing that was very common in all our conversation is I have seen that you put a lot of dedication to guide people. And so in this case, since my guest is a versatile personality, I'd like to ask my guest specifically, okay, what is your life motto? How would you define Dr. Amit Phillora? What is the aim for not just for everyone, but in as an individual, what are your thought process to for the success? My is curiosity. It kills me. If there is something new, Abs- it's like that I have to get it, boss. Be it technology, be it topic, be it anything. I do not like to repeat things. So for example, if we have a conversation, I will not talk on any topic which has already been done in the past anywhere. Mm. All my research papers, which 70, 80, whatever research papers I have done, or whatever the books I have done, written, I tried my level best to bring things which is not done in the past by anyone, or whose information is very limited. If I say, like, for example, if I when I might have shared this word neuroplasticity with your team, they might be, ये क्या होता है? Absolutely. ये See, क्या this चीज, is ये what ऐसी भी कोई yes, चीज of होती है? course. Yes. So So it is very common, and I always seen that you research at to an extended level, which is out of the human. Matlab, I'm talking about a normal person's, aim also, because every individual today, because of you can see the technology and people are into the social media and all, like, so half of the time their mind is busy scrolling down. Now in this, it is very important to stop at that one point of time where it is filled with education, what you've been spreading by your words. And this is one of the reason that I wanted to take your interview, was because the message that you want to spread is so accurate, and it is the need for today, because for tomorrow, if we talk about, the entire globe is going to be
dependent on our generation we are relying on. And where are we taking our generation? They are completely in social media today. They are completely into a easy life. Everything is in a platter for them. Like they are not using their mind at to an extended level because they feel everything is so simple. Now, So in this simple, case, and what at the is good? same time, this is increasing crime rates as well. Not Yes, only in outside family, but inside family also. But there was a very recent case in India, somewhere in North India, where a 13-year-old girl killed her mother because she was stopping her from using mobile phone. Just yes, I know imagine, what's that. the age? Just a 13-year-old kid. I mean, and you see the level of addiction and violence. You forget about that kind of violent nature. You just see in our own family, small kids, they know how to operate iPhone kind of complex devices. Nobody I was teaches about to tell them. you this because if I talk about my niece, she is hardly 2.5 years, and she knows how. And when the cell phone is locked, she knows how to unlock it. And I'm Exactly. still wondering, she doesn't know the password. I keep on wondering how And to it's do it's that, and so she does the harmful YouTube for her. also. It's so harmful for her. The Yes, rays and everything yes, is so we're just harmful for working her. on that. We're just working. We're just keeping all this and folds apart. But the point is to think about is they know to unlock it. They know to open the YouTube. YouTube mein jaake, they know how to start the cartoon. Exactly. Whatever they want. It's not about the Yes, cartoon. And internet is she so she got it what she want. exactly. And that could have been used into a vice versa place also. But instead of Exactly. that, they have been putting in their zone because what they want, where the Let's mind is let me inclined. tell you there's a negative example, but I'll tell you that a couple of days before we were having a family discussion where we were discussing these terrorists and all use all latest technology and all, and I stopped that. No, none of the terrorists use the latest technology. They use Nokia का पुराना 3310 type of mobile, nut bolts, chemical ताकि bondings. पता ना चले. हाँ, पता ना चले, आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। कोई Obviously. भी जो एजेंसी होती है, जो हाईटेक होती है, जो मतलब वैसे इसमें काम करते, दे डू नॉट यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिकॉज इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दे विल बी ट्रेस्ड। सो Absolutely. जो आजकल जमाना चल रहा है, पावर जन एआई, पाइथन एंड ऑल, विच इज किलिंग लॉट ऑफ पीपल्स जॉब. It's good that you have you're making life people's life technology dependent, but at the same time you are eating up people's employment and making them more lazier day by day. Absolutely. So for any kind of neural activity, neural brain, your brain have muscles. Yes, of आप course. जैसे आपकी बॉडी के मसल्स होते हैं, वैसे ब्रेन के मसल्स होते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्कआउट नहीं करते हो, सपोज यू डू नॉट डू फिजिकल फिटनेस, आप कैसे हो जाते हो? मोटे हो जाते हो, ढीले हो जाते हो, या यू डू नॉट लुक द वे यू लुक, यू Absolutely. वांट टू लुक। एट द सेम टाइम मतलब आप अगर अपना दिमाग नहीं यूज करते हो, तो क्या होगा? एट पीरियड ऑफ टाइम आप वो सेक्शन ऑफ ब्रेन डेड हो जाता है। Mm. आप बेसिक टू प्लस टू करने के लिए, अरे यार वो पेंसिल पेन लेके आओ, या फिर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, वैसी सिचुएशन आ जाती है। सो आर वी मेकिंग आर जनरेशन टू दैट डिपेंडेंट की, मतलब अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो, फोन ना हो, आप कम्युनिकेट ही ना कर पाओ। Absolutely. दे यूज टू बी पीरियड, आप आपने आपके हमारे जनरेशन में हमने एक वर्ड सुना था, पेन फ्रेंड्स। Mm-hmm. सो आप लेटर्स लिख के फ्रेंडशिप बनाते थे, एंड वो फ्रेंडशिप, एंड दिस मूवी भी है एक, आई डोंट Yes. रिमेम्बर द नेम, संजय कपूर एंड प्रिया गिल, दे वर द एक्टर इन एक्टर एक्ट्रेस इन दैट। और पेन फ्रेंड्स के ऊपर मूवी बनी थी कि दे यूज्ड टू राइट लेटर्स, एंड लेटर्स के थ्रू दे गेट टू नो, एंड देन द लव ब्लूम्स। पहले जमाने में एक क्यूरियोसिटी होती थी कि मतलब एक लेटर आ रहा है, तो लोग हफ्तों से बैठ के लिटरली डोर पे बैठते थे, कि वो पढ़ते थे, कि पूरी फैमिली बैठ के पढ़ती थी, एक एक चीज पढ़ती थी, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय दैट लेटर अ लॉट। सो वो एक एंजॉयमेंट होती थी। अब क्या होता है, आपने एक टेक्स्ट भेज दिया, उसकी पूरी क्यूरियोसिटी खत्म होगी, 2 मिनट की खुशी
भी मतलब यू डोंट वैल्यू दैट मच इन दोज मैसेज। आपको हजारों आपके फैमिली फ्रेंड्स के मैसेजेस आते होंगे, आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, पिक्चर्स लेके भेज देते होंगे, एंड दैट आपने देखा अच्छा फाइन, वो क्यूरियोसिटी खत्म। बट जब पहले क्लिक थ्री कैमरास होते थे या जो चीजें होती थी, यूज टू लिटरली कॉल फोटोग्राफर, भैया फोटोज रेडी हो गई क्या, एंड देन यूज टू डेकोरेट योर एल्बम एंड यूज टू पुट ऑल दी। तो वो चीजें अब खत्म होती जा रही है। आपने वो सारी चीजें डिजिटलाइज कर दी, आपको उसका क्रिएटिव क्रिएशन वे ही पूरा खत्म हो गया। हाउ मेनी पीपल यू फाइंड हु आर एक्सपर्ट इन फाइन आर्ट्स, जो हैंड स्केचिंग होती है एंड ऑल। एम एफ हुसैन के बाद तो मैंने कोई फेमस नाम नहीं सुना जो अभी आज के जनरेशन में। दे आर कैरिकेचर्स एंड पीपल हु लाइक टू डू दैट, बट कितने कि क्या उनको उनको कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा, बिकॉज सारी ये चीजें डिजिटलाइज हो जाती है। मोबाइल का एक ऐप खोल के आप सामने रखते हो और आपकी वो हाथ से बनी हुई पेंटिंग जैसी चीज पूरी एआई बना के दे देता है। अगर आपको कुछ चीज पढ़ना है या फिर कुछ करना है, चैट जीपीटी आपकी चीजें सॉल्व करके दे देता है। इट्स गुड दैट इट्स सेविंग द टाइम, बट इट इज किलिंग योर ब्रेन एक्टिविटी। आपकी खुद की क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एबिलिटी सब जाती जा रही है। सो Absolutely. द फ्यूचर जो अभी आ रहा है, जैसे आप यूएस यूके में आप अगर आप जाओ तो डिलीवरीज, हाउ द डिलीवरीज हैपन, दे हैपन थ्रू ड्रोन, दे हैपन थ्रू ऑटोबॉट्स, दे आर हैपनिंग थ्रू व्हीकल्स जिसमें आपके ड्राइवर्स ही नहीं होते हैं, टेस्ला जैसी की गाड़ी होती है ऑटोमेटिकली चल रही है एआई के जैसे। सो यू अंडरस्टैंड कि अगर आप सारा चीज इस पे डाल दोगे तो लोग कमाएंगे कैसे? अब इन सब चीजों को करने के लिए एक या दो लोगों की जरूरत होती है, बाकी तो मेजोरिटी ऑफ यूर क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब Absolutely. उनको अपस्किल करने के लिए आप कर क्या रहे, कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपस्किलिंग भी कर देते हो तो बेसिक तो फिर भी नहीं आते। There are, I, once I visited some college or somewhere and I named old books. जैसे Mhm. आर एस अग्रवाल, मनदीप सिंह, जो हमने अपने टाइम पे मैथ्स में पढ़ी थी, दे डोंट नो हु दीज पीपल आर। Mhm. सो और एंड दे आर द जीनियस इन आवर टाइम। उनके उससे पूरी हमारी बेसिक पूरी बनी पड़ी है उससे। Right. सो अब दे द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग बुक्स, आई से कि मतलब नेट इज ओके, बट आप जब तक मोटी किताब पढ़ के उसमें नोट्स नहीं बना के, फ्लैग नहीं बना के, उस पे बुक मार्क लगा के या फिर कलरिंग करके नहीं पढ़ते हो, तब तक वो चीज यहाँ पे रजिस्टर नहीं होती। वो Absolutely. आप टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए याद कर सकते हो, उसके बाद फिर जब वो चीज चली गई वो गई। बट जब आप फ्लैग्स बना के रखते हो, आप कभी भी वो किताब उठा के देखो, यू विल रिमेम्बर इस किस पेज पे क्या आपने फ्लैग बनाया, क्या चीज है, और आप वहां पे एग्जैक्टली वहीं जाके देखो। True. वेरएस इंटरनेट में ऐसे नहीं हो, कितनी चीजें आप सेव कर सकते हो। Absolutely. जितने भी पुराने लोग रहे हैं या फिर जितने भी जो जो आई विल कॉल इंटेलेक्चुअल पीपल, उनकी अपनी खुद की लाइब्रेरी होती है खूब। आई मीन दे रीड लाइक क्रेजी। दिन दिन में चार चार पांच पांच किताब मैंने खत्म करते हुए लोगों को देखा, एंड द वे दे टॉक एंड दे कम्युनिकेट, awesome. I mean, you feel like you're talking to a person who knows things and is not talking in air. So true. So reading that makes a man perfect. Exactly. I mean, you दूसरी बात कि गूगल से आप पढ़ के बेसिक चीजें ले सकते हैं। गूगल आपको डॉक्टर नहीं बना सकता, राइट? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो एंड यू विल स्टार्ट थ्रोइंग गूगल ज्ञान, तो डू यू थिंक दैट डॉक्टर विल एंटरटेन दैट? Absolutely अब not. गूगल पढ़ के डॉक्टर कोई भी बन जाएगा ना, मतलब उसमें ये चीज है वो चीज है, बट एक्चुअल चीजें नहीं होती। Right. नाउ द सर्जरीज आर हैपनिंग थ्रू रोबोटिक्स एज वेल। Right. सो मेनी एरर्स आर हैपनिंग ड्यू टू दैट। क्या आप जो मेडिकल साइंस आजकल हो गई है इज कन्फाइंड टू ऑर्गन। Mhm. I have seen a very recent case, not will not name that, but there was a surgery happening where bypass karna tha. While doing a bypass, the doctor found out there is a cancer in just below in one of the arteries. The doctor didn't remove the cancer, just closed the completed the bypass and came out of it and said that कि आपके patient को cancer भी है, आप cancer करवाओ। अब आप कैन यू इमेजिन, जो कैंसर था वो स्टेज 4 कैंसर था। आप एक बार ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास कर चुके हो, अब दोबारा क्या वो पेशेंट अपने खुलाने की उसमें हिम्मत होगी? Yes. पेशेंट नहीं बच पाया, वो नहीं बच पाया। सो द डॉक्टर्स आर ऑल्सो एजुकेटेड इन अ वे दैट दे आर ओनली कन्फाइंड टू देयर डोमेन्स ओनली। अगर उनको पता भी चलता है, दे आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क। सो Absolutely. विच इज आई फील सॉरी अबाउट इट। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था।
डॉक्टर, एक एमबीबीएस डॉक्टर को सब आता था करना। Right. वेयरएस आपने आप एमडी कर लिया, एमएस कर लिया, या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन कर ली, जो भी चीजें कर ली, आप वहां पे जाके पिन पॉइंट हो गए, और अगर ऑन स्पॉट प्रॉब्लम आती है तो यू आर नॉट डिसाइसिव इनफ टू टेक दैट रिस्क एंड सेव द पेशेंट। So दे विल से हमको नहीं आता, हाउ कैन आ डॉक्टर कैन से देर हमको नहीं आता। absolutely. बेसिक एमबीबीएस में सब चीजें पढ़ाई जाती, सो दैट इज व्हाट आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम इज लैकिंग। Right. So what is your one message for everyone? I'm talking about the, like even in the domain who are looking after the education department, even as the parent also, even for the children also who's going to watch. आप सबके लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे? Be curious, be curious, because if you are not curious, and be challenging, because if you do not challenge yourself to learn new things, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, और अगर आप वहीं के वहीं रह गए तो you will not grow in your life. So if you want to be somewhere, like look at your journey, you started from where and now you're at where, and you never, I'm sure you never might have done anything repetitive in your life. Yeah. अगर आप रिपीटेटिव चीजें करते जाओगे तो आप एक स्टीरियोटाइप बन के रह जाओगे, और आपकी लाइफ मोनोलिस्टिक टाइप की हो जाएगी। Absolutely. Since you're talking about publication also, so we have to be एग्जैक्टली, curious to bring the best content, and every time we have to bring a different content because the readers will not prefer or like or accept the same content, repeated content. We have to be creative here. creative. If you're, even if you're bringing the same content, you, there should be We have something to new frame in it there. in a different level. हाँ, you have to have a new thing, because अगर आप जैसे न्यूरोलॉजी की बात करते हो, न्यूरो एनाटॉमी की बात करते हो, न्यूरो एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑफ ऑफ मेडिकल साइंस भी होती हैं। जैसे न्यूरो प्लास्टिसिटी के बारे में बताया, डाइवर्सिटी इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, उसमें आप न्यूरो डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन करते हो। न्यूरो मार्केटिंग इज अ कम्प्लीटली मार्केटिंग टॉपिक। आपकी जैसे मेरे को एक बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल याद है, विच आई विल लाइक टू शेयर विद यू, एंड आई आस्क अ क्वेश्चन एज वेल। You're welcome. सो एक इंसान एक सॉसर के पास जाता है, सॉसर के पास जाता है, and पूछता है कि व्हाट इज द की वे टू बी अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इन माय लाइफ। तो सॉसर बोलता है कि भाई तू सुबह 6 बजे मेरे पास आ जाना, नियर द रिवर, एंड आई विल टेल यू कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। तो कहता है ठीक है। ही कम्स एंड ही वाज हैविंग अ स्नान नदी के अंदर। The person comes and said, come step inside the water. The person steps inside the water. The moment he steps inside the water, the saucer put the person inside the water. And he is struggling, and the saucer does not allow him to come over the water for 1 minute, and then releases the hand, and the person comes, like like that, सांस लेते हुए and घबराते हुए and all. So he says that, why did you do that? So the saucer says that कि जब तुम पानी के अंदर थे तो what were you doing? You were struggling hard. What was your main aim at that time inside the water when I kept you for 1 minute, for a minute? Answer that. Answer that. This is what is the reason I feel like you are here. Answer that. Yeah, yeah. Actually, I was half off-minded. So yes, of course, one thing is for sure that I understand your point that maybe I'm not prepared for the answer. But yes, of course, I should have been focused. I was more focused towards the other things that were happening. Yeah, anyway, just Should I repeat it again? yes, of course, you should. So I should repeat the story, or I just repeat No, no, the. no, no, no. Just the point. Actually, I was just like putting So sending my pet. the saucer asked the person, when I kept you inside the water, you were struggling hard. What is the main thing which is coming in your head at that, during that 1 minute when you were inside water? I want to come out. Then how Inside to save water. life, how to No, breathe. exactly. Yes. How How to to breathe. breathe. Agar So if that the is the person is content because able when to, the if the yes, person is able to breathe, he will not struggle out for his life safety. He right. will find other ways. I have recently seen a woman, like a story was been covered that she stayed in water for almost 30 days and she was breathing because she was down deep down the sea level.
So that was the main art. If a person knows how to But breathe over properly, here, survive. the thing is not that. Over here is Hey, you are talking about the mindset. yes. You're No, talking about the mind level that is to the think. ability she learned to stay inside the water. And you're So talking about life ability exactly. of So accepting and it's learning. the goal. It's the Yeah. goal. So when the person was inside, his whole focus was that how what should I do to have a breathe. So if you want to be successful in your life, you want to have a hunger for it. You're here in your place because you had a hunger and carving, craving that I want to be the head of the publisher. I want to be something where which people should be, globally, recognizing my name and pattern. And for that, you have a way, you might have had a very tough life, discipline, coordination, and different kind of things you might have done in your life. Many sacrifices you might have done in your life. Of course, like since we have been talking about this, Dr. Amit, I'd like to ask you one more thing because like I have seen you putting a light on education and giving perfect guidelines, like helping them to move ahead, helping them to choose what exactly is their ability is probably where they need to head ahead. But like there are many things where failures are something that have to taste it. And when we talk about failures, I believe they get into depression. They'll just, like they, at times I've seen people giving up. So, what is your advice for those people who have failed and they have given up their goals and they are stepping back? अमिताभ बच्चन की एक बहुत फेमस लाइन है जो अक्सर वो बोलते हैं कि मतलब मर्जी का मिले तो बहुत अच्छी Wow. बात है और अगर मर्जी का नहीं मिले तो दैट मीन्स गॉड हैज समथिंग बेटर फॉर यू इन योर See, today's generation is far लाइफ beyond these thought. नो सी Honestly आई speaking, अंडरस्टैंड जिद अच्छी बात है ये मतलब कि किसी चीज के लिए आपने एफर्ट्स किए कई चीजें आपने की बट अगर वो उसमें अगर आपको फेलियर हुआ तो उसमें भी नुकसान नहीं right. देयर इज अ वेरी फेमस बुक उसका ऑथर मैं भूल गया हूँ इट्स ओके टू फेल सन इट्स अ वेरी फेमस तमिलियन राइटर है उसने ये बुक लिखी थी एंड वेयर ही गाइड्स हिज चाइल्ड अगर एग्जामिनेशन में आप पास नहीं होते फेल होते हो या फिर बार बार चीजें करते हो दैट डज नॉट कन्फाइंड यू दैट कि यही चीज से आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो गए अब दुनिया में हजारों लोग हैं जो शायद प्रॉपरली एजुकेटेड भी नहीं है एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम रील में आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन आई फॉरगॉट द नेम ऑफ अ गर्ल 13 ईयर या 14 ईयर की लड़की है एंड शी इज रनिंग अ ह्यूज बिजनेस ऑन हर ओन and she her parents do not educated her or educating her for basic studies which our people our student do कि मतलब आप हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल पढ़ते जा रहे हो वैसा नहीं है दे वर वेरी कन्फाइंड एंड टू द पॉइंट कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है Right. and it is very important to know what not to read than what to read. So nice. So this is how I believe, like since you've been talking about neuroplasticity. So it's somewhere about the neurons. It's about the mental mindset also. And as you said, even the parents play the major role here to understand their child and their ability and their interest also what which where they, it's not always that a doctor's child will be a doctor. Probably they have Exactly. something else in their mind. Their goals are different. So one has to be, like adjustable, and of course at the same time they have to accept the choice of their children. So it's something like, when you wire it right, you have empowerment. When you wire it wrong, then it is de-empowerment. So Absolutely. आप जब भी कोई चीज नई करते हो या कोई भी एक हैबिट नई अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हो तो न्यू सेट ऑफ न्यूरॉन्स डेवलप हो और अब जब भी कोई एक पैटर्न जो आपका बिहेवियर है उसको रिपीटेटिव फॉर्म में करते हो तो वो एक 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 आपकी एक हैबिट बनती है अब आप उस नई चीज को अपने एग्जिस्टिंग बिहेवियर में लेके आते हो तो वो हैबिट चेंज होती है जब वो हैबिट चेंज होती है और उसको आप रिपीटेटिव लेके जाते हो तो देर इज ऑलवेज एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ इट कुड बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इट कुड बी अ नेगेटिव इम्पैक्ट डिपेंडिंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू हैव अब जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है आपके वर्क कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक मीटिंग में जाना है सपोज यू वांट टू गो टू अ मीटिंग एंड यू हैव you see something or you happen to see something which
which triggers your negative cycle. आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हो, आप फोकस नहीं कर पाते. तो डू यू थिंक दैट व्हेन यू एंटर इनटू द मीटिंग हॉल विल यू बी एबल टू कंसंट्रेट? यू विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट. Because the mind is there. You will get you probably will not be able to give your 100% in your performance at that period of time will dip. Absolutely. बट अगर आपको पता है कि इस चीज से मुझे नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होती है, तो मुझे इस चीज को कैसे इग्नोर करके आगे चढ़ना है. So what will happen is that you will be able to bypass that. And when you're able to bypass that, you will be able to give your 100% at that meeting room. और इसमें फिर आप ब्लेम गेम नहीं खेलोगे. Yes, so for sure, Dr. Amit, अभी next time मुझे आपसे psychology के लिए एक लेना बहुत जरूरी है. It's going to ये help. साइकोलॉजी है मैम. दिस Yes, इज of course. साइकोलॉजी ओनली. Of course, सो it is. It ऑलवेज is. रिमेंबर, जो आपके थॉट प्रोसेस होते हैं 90 डिग्री ब्लॉक्स पे चलते हैं, लाइक दिस लाइक हाँ, दिस लाइक क्योंकि दिस. ना मुझे अभी आपके साथ में और एक फिर लेना होगा ग्रीफिंग के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं ये प्लेटफॉर्म पे अभी ना बोल सकूं, इसके ऊपर लेकिन बातचीत जरूर करूंगी एक आपसे, जरूर 100% इंस्टाग्राम या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी गोइंग टू बी डिस्कसिंग जस्ट अबाउट, फॉर मी, यू बिकॉज हैव माय ऑल नॉट डिटेल्स. जस्ट मी, आई बिलीव it's beyond the thoughts. There's so much to talk about, and like at times you get stuck up in your mind. It can happen to anybody. It's not just about me losing losing their life, but it's suppose there are many who have. When we talk about losses, it can be for any, even for the education also. The loss can be for a child also. So ये जो चीज से मैं गुजरी हूँ, I feel there are many even children being a Yeah, they part. do. I come across with many people, where they struggle to find कि कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा पढ़े. Yes, yes, एंड जब उनका कैस का एग्जाम लेते हो, दैट इज करियर एडवांस एनहांसमेंट एग्जाम, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एंड दे आर डूइंग इन ऑल सब्जेक्ट्स वेरी गुड, फिनोमिनल परफॉर्मेंस. मैथ्स 100% है, साइंस 100% है, ह्यूमैनिटी 100% है. प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको ये नहीं समझ में आता कि मतलब क्या टॉपिक्स लें, मतलब. और दूसरी बात कि वी एज अ पेरेंट वी फेल टू recognize anything except engineering and medical. so true. That's so nice. So इसी where I बारे में want to मुझे bake a. आपसे बात, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे इसीलिए सब जगह पे स्प्रेड आउट भी करनी थी, बिकॉज लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पेरेंट्स आल्सो टू गेट इन टच विद यू, probably to discuss, though the child is very good in education, it's important to understand the mindset of the child, probably क्योंकि उसका साइकोलॉजिकली एजुकेशन में एक्सपर्ट होना इज नॉट the final goal, a final decision for Exactly. the career. It can be anything else as well. And I have witnessed many. In fact, I know a story about somebody where the child didn't wanted to be something. वो पढ़ रहा था because parents चाहते थे. And then मोस्ट ऑफ अस, आप देखो, जितने भी इंजीनियरिंग बच्चे हैं, इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, उनको वो उन्होंने इंजीनियरिंग की ही क्यों? बिकॉज देयर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउड देम टू डू. उसके वजह yes, से क्या हुआ कि अब इंजीनियरिंग तो कर ली, तो जॉब भी तो होना चाहिए. अब right. मोस्ट ऑफ Right. माय तो फ्रेंड्स हु आर क्योंकि वो इंजीनियर. अंदर से वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज उनका माइंडसेट ही नहीं था. तो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जो शायद से जरूरी है उन तक ये मैसेज भी जाना कि इट्स इम्पोर्टेंट टू फॉर देम एज वेल टू पुट सम लाइट ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो आप मुझे बताएं कि हाउ कैन एनीबॉडी रीच आउट टू डॉक्टर अमित, and how My can Dr. Amit number be you a have. part of You their have my their number. future goals? Mm. You have my number. My Instagram profile is very much open. A huge followership over there is there. I'm active in all platforms. Just be platforms say they want to get communicated with me, they are most welcome and get in touch with me. I do not, for helping out people, I do not charge anything. It's always free. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज हो या एजुकेशन से रिलेटेड चीज हो, because I educated myself in this field just to help people, not to earn money on that. I have a very good job and stable job, and I'm happy with what I'm doing with Amazon and different writing thing. Is that I had because when I was going through my teenage and all, I found very difficult for the people to guide me what is to be taken, what is not to be taken. So I do not, whenever the person comes to me with that, देखो मेरे बच्चे के percentage इतने अच्छे हैं and I want that kid to study about this particular subject only, whereas I say that पहले उसको
समझो तो whether he wants or she wants to get into that field, आप इंजीनियर बना के एमबीए करा रहे हो या एमबीए बना के, सब जगह वही हो रहा है, तो आप कर क्या रहे हो? So it is very important for a child to know what he or she wants, and उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर स्कूल में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होना चाहिए। सो जैसे हमारे टाइम पे एसयूपीडब्ल्यू होता था, या फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें सिखाई, बेसिक चीजें सिखाई जाती थी, वैसे एक प्रॉपर इंटर्नशिप प्रोग्राम वैसे कई स्कूल्स में आ गया है, होना चाहिए, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी या साइंस से रिलेटेड या नॉन साइंस से रिलेटेड चीजें दिखा सकें, एंड देन दे डेवलप कि वेदर इन विच डायरेक्शन दे वांट टू बी। सो इट शुड बी, द एजुकेशन मस्ट बी मोर प्रैक्टिकल रादर देन थियोरेटिकल। कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स की डेफिनेशन आपने इतनी लंबी पढ़ दी और उसको समझ में नहीं आया और आप रट्टा मार, रटन टू तोते नहीं बनाने हमें, वी समथिंग लाइक दैट which a person should learn the concept about it, not the theory of it. Theory is important, but practical is more important. Understand that कि जो आप लाइव चीज देखते हो वो ज्यादा तेज से सीखते हो rather than आप जो पढ़ने। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन आई विल से थ्री इडियट का एग्जांपल, where Amir Khan was requested to go out of the class because उसने मशीन की डेफिनेशन बहुत सिंपल फॉर्म में बताई थी, whereas जो दूसरा कैरेक्टर था उसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म Technology. में बता दी थी, एंड द फैकल्टी हैज सेड दैट कि मतलब बुक लेके चले जाओ, उसने उसी चीज को इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके में उसके सामने बोल दिया, एंड देन ही सेड भैया तुम बोलना क्या चाहते हो? कहते नहीं, आई हैव कम हियर टू टेक माय बुक। कहते सीधा सीधा क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको सीधी भाषा समझ में नहीं आती है। So what is important for the children is that they should know the concept of it rather than the definitive form of it. Absolutely. और दूसरी बात, इंडियन पेरेंट्स को ज्यादा ये समझना चाहिए दे शुड प्रमोट गुरुकुल प्रणाली जो होती है, बिकॉज जो गुरुकुल एजुकेशन है वो हमारी जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे बहुत एडवांस है। जो वैदिक मैथ्स आप पढ़ोगे, जो कॉम्प्लेक्सिटीज आप जो अपने इंग्लिश वेस्टर्न मैथ्स में पढ़ते हो, वो ऑलरेडी उसमें है। अब आप अगर आप साइंस की बात करते हो, गुरुत्वाकर्षण की बात करते हो, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत पहले आ चुकी थी। Absolutely. सो अब कितने लोगों को पता है कि एक्चुअल कहाँ ये सारी चीजें कहाँ है? देयर so many books, and if you go to the traditional gurukuls where they teach you medical science, they teach you psychological science, जो मनोचिकित्सा जिसे बोलते हैं, एंड सर्जरी केम फर्स्ट इन इंडिया, चरक सरिता जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत कूट कूट के बढ़ी। इज दैट जस्ट द वेस्टर्न कल्चर केम इन आवर कंट्री? And majority of the people for us, you can say more of all driven towards the Western culture, Yes. adopting, yes, adopting the, like education. Also, if we talk about, it's like not just about the normal state boards. I feel state boards are much better because after 10th, probably the child can decide what. My concept is for that ki why to categorize things in boards and Yes, so today examination. ICSE is there, IGCSE Exactly. is there, then IB boards are there. So there are, you can say, different, and they are focusing on child's ability. Whereas I feel when the child is actually matured by the time he is See, already been into some or the other. what today is happening, अगर आप ना एक ध्यान से देखो, एक 6-7 साल का जो बच्चा स्कूल जा रहा होता है, उसके साइज से तो बड़ा उसका बैग होता है। So Can you imagine a 7-year-old or 8-year-old or 10-year-old younger one is coming at home and preparing a presentation in laptop? उसको absolutely F1 F2 के पेपर्स की प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ रही उस एज में, जहाँ की ही शुड बी मोर फोकस्ड ऑन एवरीथिंग, बैलेंस्ड काइंड ऑफ थिंग। So right, what the people are, the competition is there, I understand that, but at the same time आपको ना सही चीजें सही अमाउंट में सही एज में आनी चाहिए। right, सो अगर आप उसको एक कंटेनमेंट में डाल के बंद करके रख दोगे तो वो सिर्फ एक ही एरिया में ग्रो करेगा, mm, सब चीजों, और बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेगा, एंड दैट्स द रीजन व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड, बिकॉज उनसे वो प्रेशर नहीं हो पाता। नहीं हो पाता एट द है। सेम टाइम पूरी सोसाइटी उनके ऊपर प्रेशर डालती कि ये करो ये करो ये करो, नहीं तो नहीं सकते। किसने बोला?
who desire, who defines that if you are not an engineer, if you're not a doctor, you can, or if you're not a CA or CS, you cannot be successful in life. Absolutely. If you see, एक जनरल सेंस में ही बात करता हूँ, एक नॉर्मल जो शॉपकीपर होता है, जो अब खुद का एंटरप्रेन्योर होता है, ही अर्न्स मोर देन इवन इवन यू कैन इमेजिन। और उसका डे टू डे का कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के, आप देखो, फट 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 बिना कैलकुलेटर के वो कैलकुलेट करके चीजें, वो एक सीए नहीं कर सकता। एक मैथमेटिशियन को फोन लगेगा, कैलकुलेटर लगेगा। आप किसी दुकान में जाके देखो, छुट्टे पैसे अगर आप, दैट्स बेसिक थिंग ना, 100 का दो, 500 का दो, कभी उसने कभी गलती की होगी छुट्टे में, बिना कैलकुलेटर या बिना किसी के। एक बिल्कुल। रुपया नहीं बनिए होते हैं, 1 रुपया भी नहीं खर्च नहीं छोड़ेंगे। सो दैट इज व्हाट द थिंग इज अबाउट। आप अपनी एजुकेशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं। समथिंग कॉल्ड एज न्यूरल एक्टिविटी फीडबैक लूप बोलते हैं जैसे। अगर आप जिसको अगर आप पॉजिटिव चीजों का अगर आप लेके रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हो, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हो, नेगेटिव में तो नेगेटिव। और इसमें भ्रांतियां भी बनती हैं कई। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने एक किसी इंसान के प्रति एक प्री कंसाइंड नोशन बना लिया कि ये ऐसा करेगा, तो उस अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा भी करना चाहेगा, तो आप उसको ये सोचोगे कि वो मेरा बुरा करना है, नुकसान कर देगा। तो राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, से आई एम एम्प्लॉय ऑफ योर्स, ठीक है, एंड यू थिंक दैट कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड इस अपॉर्चुनिटी को अगर मैं अमित को डालूंगी तो ही विल डू वंडर्स, and you approach to me and said that कि this is a vacancy, we have made arrangements and all, you should do that। अब मेरे दिमाग में आएगा, अरे यार ये तो मतलब मैनेजर बड़ी खतरनाक थी, ये मेरा कभी भला करनी, जरूर दाल में कुछ काला है and all stuff, and I will reject that thing, and other person will take that opportunity and will raise the ladder। राइट। तो आपको हर चीज में विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है, और आप बायस नहीं रह सकते। आप चीजों को वेटेज करो, कैलकुलेट करो, एंड देन फिर इम्प्लीमेंट करो। तो तभी आप चीजों में नई चीजें सीख सकते हो। पीपल हु डू नॉट डू, एंड दैट्स द वे दे suffer from certain something called as learning disabilities। Absolutely, so wonderful. And Dr. Amit, it's always whenever we come, I believe मुझे कम बोलना पड़ता है because you have words, I can say, limitless. So in this case, yes, of course, it's wonderful to be having a mentor because like you guide them in a right way. You have been assisting them to reach their goals. Every individual who come in your way, probably the person who needs the assistant, and you are there always 24/7 to guide them, assist them, even for parents, be it for children, for the mentors as if. So in this entire journey, it has been, I believe, for me also, because as I said earlier also during the introduction, that I have taken the guidelines from your, uh, of course, you have been a great mentor for me also. So entirely, when we talk about education, I believe it's one-stop solution. Dr. Amit Phillora is there to assist you, guide you in a way. Probably it's very important for us to help our child reach their destination, and which you can be the great guru for, as it Nothing like to, that। to of course to I guide can and tell assist. what I have learned, but ये हमेशा एक चीज जरूर कहता हूँ, सुनो सबकी, करो दिल की। एब्सोल्युटली सही कह रहे हो, लेकिन आप क्या होता है, हम सुनते सबका है, लेकिन हमें उसमें से क्या क्या चीज अपने लिए एग्जैक्टली व्हाट यू beneficial है वांट टू, वो लेना जरूरी है। वो फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है। Yes, filtration is very important. Even when we talk about technology, technology के side effects भी हैं और उसके benefits भी है. We are globally बचपन में growing मैम एक because of ऐसे लिखते थे ना, technology. इफ यू रिमेम्बर, बचपन में एक ऐसे लिखते थे, टेक्नोलॉजी इज अ बूम, और Yes, ब्लेस। yes, of course. So we have to take everything in a vice versa, and we have to हमें choose करना होता है, हमें हमें उनमें से चुनना होता है, अच्छाइयों को चुनना होता है जो आपकी तरफ से एक एक guideline चीज है। आपसे और पूछना चाहूंगा, सॉरी। जैसे सपोज, ये मैं हमेशा हर एक इंसान से पूछता हूँ, दो चीजें पूछता हूँ फिर, कि अगर आपने घर से, आपको किसी शादी में जाना है सपोज, हम्म। एंड योर टमी इज फुल, आपका पेट पूरा खा पी के घर से निकले, एंड जब आप किसी शादी में जाते हो, आपके सारे फेवरेट चीजें रखी हैं, तो व्हाट विल यू डू? यू विल ईट और यू विल स्किप? Of course, ये एक पहली चीज ये होगी कि घर से खाकर नहीं जाना है। खा के निकले सपोज, तो क्या? हाँ, तो वी विल चूज, लाइक इसमें से जो बहुत बहुत ज्यादा पसंद है उसी चीज को चूज करेंगे, क्यों? क्योंकि वो माइंड सेट है उस नहीं, पर। माइंडसेट नहीं, क्यों? शायद दिल को पसंद है। Nobody can force you to do something which you do not want, एब्सोल्युटली यस, right? तो जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगी वहां पे। The reason is want.
Yes, yes, absolutely. The reason is Thank you so much, Dr. Amit. मैं शायद से नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके सामने आऊंगी तो अपने आप को बहुत प्रिपेयर करके आऊंगी. एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, if you don't mind. नहीं नहीं, द टाइम इज अप, बट एनी विच वेज, यस ऑफ कोर्स यू कैन टेल मी. अगर कट हो जाएगा तो फिर वो नहीं, अगली मैंने बार. बता दिया आपको. क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आपसे पूछूं 2 + 2 = क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं. नहीं, आप बता दीजिए. थोड़ा तो मेहनत कीजिए. टू इसके दो प्लस टू इज आंसर हैं. फोर. इसके दो आंसर हैं. ओके. एक देता हूँ. एक पॉजिटिव में आंसर है, एक नेगेटिव में आंसर. अब बताइए. और दोनों में एक का डिफरेंस है. देखिए, मैं इसका मैथमेटिशियन से बात करूंगी, मुझे पता है आई लूज राउंड बिकॉज आई एम नहीं, अ. मैथ्स नहीं है ये. मैथ्स नहीं है. अच्छा, ठीक. आप जैसे एक कंपनी के हेड हो, तो आपके ओके. लिए, आपके आपकी टीम के लिए कैसा, क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? टीम वर्क इंपॉर्टेंट होती है ना. तो एब्सोल्युटली. टीम वर्क की परफॉर्मेंस क्या होती है? आप, आपकी टीम, और आप और आपकी टीम. राइट. राइट. सो इसमें क्या हुआ? 2 एंटिटी प्लस 1 एंटिटी, तो 2 + 2 = 5. ट्रू. क्या आप हुए, आपकी टीम हुई, और आप दोनों हुए. राइट. And thank you so much, Dr. Amit, for sharing your views with us. It's always more of knowledge when we talk about. And thanks once again. And soon we'll be connecting you Sure. with the next episode and talking about more about acknowledge, because it's always, whenever we talk about, the content is always different. You always try to put light on those points which are hidden tales. And thanks once again for sharing your views, which are going to be turning a blissful for all the viewers who are going to watch you. Thanks once again, sir. Thank you. And happy Sunday. Wish you the same. Same. Take care, man. Take care.